हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टॉपिक पता लग गया है, आज हम लोग राम जी को बनाने वाले हैं जिनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं। और ये जो मैंने शीट यूज़ की है ये हैंडमेड पेपर है। ये हैंडमेड पेपर का 4th पार्ट है, यानी 1/4 ऑफ 1 हैंडमेड पेपर है ये। और अभी जो मैं इसमें आउटलाइनिंग का वर्क कर रही हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक कलर ब्लैक कलर का। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं इंक तैयार करती हूँ पानी मिलाकर, तो वही प्रोसेस से मैंने इसमें इंक तैयार की है। आउटलाइनिंग मैं कर रही हूँ 000 के ब्रश की मदद से। और इसके बाद जब हम इसमें कलर का वर्क करेंगे तो उसमें मैं यूज़ करूँगी ब्रश पेन। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम मधुबनी पेंटिंग में कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसका चेहरा हम वन साइडेड बनाते हैं। बहुत रेयर पोस्टर्स ही हैं जिनमें हम फेस टू फेस चेहरा बनाते हैं, जिनमें से एक राम दरबार भी है। इसमें हम राम जी का चेहरा जो है वो सामने की ओर बनाते हैं, यानी इसमें हम फुल फेस ड्रॉ करते हैं। और वही अभी इस पोस्टर में मैं बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस पोस्टर में मैंने बॉर्डर की केवल एक लाइन खींची है, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर वर्क हम करेंगे वो जो बाहर का मार्जिन हमने छोड़ा है उसे हम एज अ बॉर्डर यूज़ करेंगे। और अंदर पूरा एरिया हम पोस्टर की डायग्राम बनाने के लिए और डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे।
तो अब हमारे पोस्टर में ब्लैक कलर का यूज़ लगभग कंप्लीट होने को है। फ्रेंड्स, हम ब्लैक कलर जब ड्रॉ कर रहे होते हैं ब्लैक कलर से पोस्टर को, तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम ब्लैक कलर को इतना यूज़ करें कि बाद में जब हम कलरिंग करें तो ऐसा ना हो कि ब्लैक कलर दिखना बंद हो जाए या कलर उस पर हावी हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो हाईलाइट करने का काम करता है किसी भी फिगर को, तो इस कलर का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसे तो मधुबनी पेंटिंग में कई बार हम केवल एक ही कलर यूज़ करके भी पेंटिंग करते हैं, जिसमें हम केवल ब्लैक या केवल मरून कलर या केवल रेड कलर यूज़ करके ही टोटल फिगर बनाते हैं और उसमें हम कचनी और भरनी का काम करके सेम कलर से ही फिगर को कंप्लीट करते हैं। पर जब हम कलर भर रहे हों, डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहे हों, तो हम ये केयर करना होता है कि कलर्स जो हैं वो ब्लैक के इक्विवेलेंट दिखें, ना कि ब्लैक कलर से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जो कलर्स हम यूज़ करेंगे उनका खूबसूरत दिखना भी इसी बात पर निर्भर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिख रहा है बहुत सारे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करके हमने इस पोस्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अब जो मैं वर्क कर रही हूँ वो इसके बैकग्राउंड की फिलिंग का कर रही हूँ। इसको फिल करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है उसमें हम कलर यूज़ करेंगे। उसको मैं 3 कलर्स से फिल करूँगी, जिसमें एक रेड है, एक डीप ग्रीन है और एक ऑरेंज है। और ये कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फिगर पसंद आया है और आप हमेशा की तरह इसे भी पसंद करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स अगेन।